News coming in right now. Centre's new advisory for international travellers. Travellers from China, Japan, Singapore to be screened. Thermal screening RT-PCR for international travellers. Quarantine for travellers with fever. Quarantine for travellers who test positive. Listen in to Union Health Minister Mansukh Mandavia. चीन में जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। As global alarm spreads over the COVID-19 mayhem in China, the centre is taking control by ensuring hospital infrastructure and other COVID-19 preparedness measures will be ready. Meanwhile, the radar on international travellers is heightened with random testing of 2% passenger capacity kicking off from today. Union Health Minister Mansukh Mandavia said that visitors coming from China, Japan, South Korea, Hong Kong would be under surveillance. They have to upload RT-PCR before travelling to India. And once they arrive in India, they will have to undergo thermal screening. In the process, if anyone would be detected positive, they will be quarantined with immediate effect. This is a dedicated gene sequencing lab. इसमें कोविड के टाइम में हमने काफ़ी सारा जो सेकेंड वेव के बाद में जो भी सैंपल आए उनको हमने एनालाइज किया और आप देखेंगे जो भी पेशेंट RT-PCR जिसका पॉजिटिव होता है उसका सबसे पहले हम RNA एक्सट्रैक्शन करते हैं। RNA जब हमें मिलता है RNA एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपने देखा होगा कि यह -78 डिग्री टेम्परेचर है, इस पर RNA सैंपल को स्टोर करते हैं। जो फर्दर प्रक्रिया है बहुत एडवांस्ड मोलिकुलर PCR लैब है जिसमें कि सीक्वेंसिंग होती है और ये पता लगाते हैं कि अल्फा वेरिएंट है, बीटा है, डेल्टा है, ओमिक्रॉन है या ओमिक्रॉन का कौन सा सब वेरिएंट है। कोरोना की चुनौतियों को लेकर के सरकार ने सभी प्रकार से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है, लेकिन मेला क्षेत्र में जो अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ेगी दिया जाएगा, लेकिन मेला सकुशल, सुरक्षित, सुव्यवस्थित संपन्न हो इसके लिए सरकार ने विचार पहले से ही किया हुआ है। पहले ही इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ILI ಸಾರಿ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಔಷಧಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಡ್ರೈ. There's a banner behind me which clearly reads no mask no entry. This takes us back to 2020 when airports were re-allowed for commercial purposes and when passengers were coming in. Now in 2022's December, when we are being cautious about another wave which may arrive, people over here at the airport, what we are seeing over here is that majority of the people, they are wearing masks and you need to wear a mask to enter the place. However, what is to be understood is also important that it is not mandatory so far to wear a mask in public. That basically means that the government has not issued a directive stating that masks will be made mandatory. One important aspect of this entire development is that people over here are wearing masks and they seem to be cautious. With camera person Prasun, this is Suryagni Roy for India Today, Kolkata. My colleague Shreya Chatterjee is now joining me live from Delhi on this. Shreya, we believe that there is of course heightened
surveillance now which is happening in terms of the preparedness that we have on the ground at the Delhi airport itself. What sort of measures have been taken in order to ensure that the random testing of 2% of international arrivals goes through as smoothly as possible? Well, Paulimi, from 10 a.m. today, we do know that at the Indira Gandhi International Airport, the arrival, there's a desk that's been set up and there's a random testing that's already started. What we also know that 2% of all the passengers from one international flight will be undergoing these tests. This will be absolutely randomly done. And right now, with the new guideline that's also kicked in that you were just sharing with our viewers, where the international travelers from China, Hong Kong, South Korea will have to undergo, they will have to provide an RT-PCR before they enter India. So these are the new protocols that are kicking in amidst the surging number of cases across the globe, and these are precautionary measures that's being brought in by the Union Health Minister to ensure that India is better prepared to tackle, if at all, there's a surge to come when it comes to the BF7 variant that's been found. Right, Shreya, thank you so much for joining us with all of those details.